miles to go. It is time for our nation to collectively resolve to emerge as the world's best. Today, India stands as the fifth largest economy in terms of GDP and second most populous country in the world. In the 21st century, we are a force to be reckoned with. Our true strength at this juncture lies with our youth. With an average age of 29 years, India has one of the youngest populations in the world. 1/5 of the world's youth live in India. This huge human resources is properly trained will drive our economic progress. With skilled workers estimated to be only 3% of our total workforce, we need to harness the full potential of youthful demographic profile of our country. With the Western world increasingly failing short of skilled human resources, it is India turn to fill up the gap globally. Justice, social, economic, and political. That is the vision of justice which our preamble promised to every Indian. The reality is that today only a small percentage of our population can approach the judicial delivery system when in the need. Majority of the people suffer in silence, lacking of awareness and necessary means. Modern India was built around the goal of removing the disparities in the society. Project Democracy is about providing a space for participation of all. Participation will not be possible without social emancipation. Access to justice is a tool for social emancipation. The Legal Service Authorities Act 1987 was enacted with the objective of reaching the persons at the bottom of the pyramid. The fact that it is aimed at offering free legal aid to 70% of our population makes NALSA the greatest legal aid provider in the world. Many of the objectives of NALSA have been translated to social realities. This was made possible because of the sincere efforts of dedicated judges, advocates, who have been shaping the policies and paving the roadmap of NALSA for the last 27 years. The governments also have been active partners in the Access to Justice project. If today we have reached people's doorsteps and have earned their trust, the acclaim goes to the cooperative functioning between the forward-looking judges, spirited advocates, volunteers, and the governments. I sincerely thank you all. I am glad that the 27 years long and noteworthy journey of NALSA is being captured and celebrated through commemorative stamp with the Ministry of Communication, Government of India. I sincerely thank the Government of India for releasing the stamp. The purpose behind this conference is to introspect about various factors governing the administration of justice and to discover ways and means to bring quality improvement in the system. The district judiciary is the backbone of the justice delivery system in the world's largest democracy. The district judicial officers are the first point of contact for much of the population. Public opinion about the judiciary is primarily based on their experience with the district judiciary. This casts a great responsibility on our shoulders. You must undertake multifaceted tasks and roles. You are the best placed to understand people's problems and social issues. Every progressive policy must find its base on a strong foundation. Strengthening the district judiciary is the need of the hour. Without any doubt, the district judiciary is a driving force behind the legal aid movement in India. Wherever I go always, I attempt to project the achievements of the Indian judiciary in winning the trust and faith of the people. But if we intend to serve the people better, we need to flag the issues which hinder our functioning. There is no meaning in camouflaging or hiding the problems. If we do not discuss these issues, if matters of pressing concern are not addressed, then the system will cripple. I fear we may be unable to fulfill our constitutional mandate of social justice. I urge all of you, therefore, to discuss, debate, and decide. This is the principle I have been following all through. I know the challenges before you are enormous. The issues of conditions of service, remuneration, etc. deserves immediate attention. The Supreme Court this week tried to address some of these issues by way of directions of implementation
of revised pay benefits. I hope all the concerned agencies will work together to sort out other issues as well. Today, technology has emerged as a great enabler. I urge upon all of you to use modern technology tools to enhance the pace of justice delivery. The agenda items reflects the need of importance of intervention by the district officers. One of the most important aspects which calls for your active consideration and intervention is in relation to the condition of under trials. The Honorable Prime Minister and the learned Attorney General have also rightly flagged this issue in the recently held Conference of Chief Ministers and Chief Justices. I am happy to note NALSA is actively collaborating with all stakeholders in securing much deserved relief for under trials. The next issue is that of effective representation before judicial forums. We need sincere and dedicated jail visiting advocates. Jail visiting advocates can later become the legal aid authorized defense counsels. Such advocates must also be accessible to families of the prisoners who are often unaware about their status. Similarly, counsels also must be aware about the conditions and needs of the prisoners and must make appropriate and timely applications before the authorities. Another important item on the agenda is strengthening the ADR and Lok Adalats. ADR through Lok Adalats, Gram Nyayalas, mediation and arbitration centers has the potential to transform the legal landscape of India by providing millions of people a platform to settle their grievances. Matters ranging from matrimonial disputes, intergovernmental disputes, government contracts, and land acquisitions can be attempted to be resolved through mandatory ADR. This will not only reduce the pendency and backlog, but also will provide much needed speedy justice to the affected parties. In this mission of justice, the occasion of young law students can potentially overall and the whole legal services landscape. Currently, approximately 1,701 universities and colleges, law colleges are producing lakhs of law graduates every year. This interaction is not only important for marginalized people, but is also highly beneficial to young students in their career and personal development. This engagement will give necessary exposure to the students to the grassroots realities of our country and the judicial system. Further, law students should consider this is a golden opportunity to interact with their first ever client and make a substantial difference in their life. The services to society will shape you, your value, and ground you to the existing social realities. As said by Swami Vivekananda, I quote, "My hope of the future lies in the youth and of character, intelligent, renouncing all for the service of others and obedient and good to themselves and the country at large," unquote. I thank the Honorable Prime Minister for his constant presence and encouragement to the legal service movement. I also thank him for allocating necessary funds and taking active interest in the activities of NALSA for the cause of justice. We all know how tight scheduled the Prime Minister's office is, yet my experience so far is that he has always readily agreed to associate himself with such events. In a span of 1 year, the Honorable Prime Minister has taken out valuable time to attend a number of events hosted by the judiciary. Thank you, the Honorable Prime Minister ji. I must also place on record my sincere thanks to Sri Ramana Kovind ji, the former President of India. He was always willing to guide us in each of our endeavors. I thank him on behalf of the entire judicial fraternity for his active association with the cause of justice. I also thank the Honorable Law Minister, Sri Kiran Rijiju ji. His active association with NALSA is visible to all. His commitment to the cause of accessible to justice is really admirable. I sincerely thank him for taking up the issues which we have discussed in the last Chief Justice and Chief Minister's conference. My brother Justice Lalit, it is better not to say much. He is a creative leader who has been working with utmost dedication to turn access to justice into a reality. I am sure his innovative campaignings will turn a new page in the history of the legal service of India. Brother Justice Chandrachud has already made a mark in giving a boost to accessibility through information technology. I am sure in times to come, the judiciary in this country will benefit from his vision. I take this opportunity to appreciate the efforts put by
the various stakeholders, the legal service authorities, the panel lawyers, and the paralegal volunteers for showing immense flexibility and determination for the cause of justice even during such difficult times. The issues highlighted and resolved in this conference must find reflection on the ground level. I earnestly hope that the momentum continues and NALSA also, along with the entire network of legal service authority, continues to display utmost passion and vigor. As a roadmap for the future, the legal service authorities are focused on developing an accessible mechanism to redress the violation of rights, empowering the people through legal services and legal awareness. I conclude by quoting Montaigne, the famous French philosopher. I quote, "In the state of nature, all men are born equal, but they cannot continue in this equality. Society makes them lose it, and they recover it only the protection of the law." Thank you very much for giving this opportunity. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन.बी. रमन्ना का उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, भारत का संविधान देश के ऐसे प्रत्येक नागरिक को मुफ्त कानूनी या विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो जरूरतमंद है। और इसी उद्देश्य के साथ सन 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना। उसी के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना हुई। और आज नालसा प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में गठित अपने विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा न्याय जो गुणवत्तापूर्ण हो, त्वरित हो और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भी हो। इसी विजन और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप तैयार करवाया है, जिसका आज यहां विमोचन होना है। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन.बी. रमन्ना से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से इस स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं। इस कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप का फर्स्ट स्पेशल कवर वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां पर करेंगे। अपने 27 वर्षों के अस्तित्व काल में नालसा ने मुफ्त कानूनी और विधिक सेवा प्रदान करने की दिशा में बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं और ये यात्रा अनवरत जारी है, बिना रुके और भी मजबूती के साथ। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार मंचासीन सभी विभूतियों का भी। देश में, ये देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो, ये सुनिश्चित करना, यही संकल्प है नालसा का और यही संकल्प है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में। दिव्य सज्जनों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम सब जानते हैं कि लोगों के लिए जिस न्याय की परिकल्पना की गई है, उसमें सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय का भी उसमें उल्लेख किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में न्याय का अभाव या अन्याय व्यक्ति को मजबूर करता है जुडिशियल सिस्टम की शरण में जाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार जब देश का नेतृत्व संभाला और सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प राष्ट्र के समक्ष रखा, उस विश्वास का आधार ही था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्यायपूर्ण व्यवस्था। आपके इसी विजन के इर्द गिर्द सरकार द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ताना बाना बुना गया है, जिसे समाज के शोषित, वंचित और दलित और गरीब वर्ग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। लीगल सर्विसेज एक्ट 2047 का जो ये आयोजन है, जिस संकल्प के साथ, वो भी आपके उसी विजन का विस्तार है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने संबोधन से हम सबको प्रेरित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस श्री यू ललित जी, जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी और देश के कानून मंत्री श्री किरण जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, हमारे साथी राज्य मंत्री श्रीमान एस.पी. बघेल जी,
हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज, सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, भारत की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे आप सभी के बीच आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन बोलना जरा कठिन होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज की ये इस तरह की पहली नेशनल मीटिंग है और मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुभ शुरुआत है, मतलब ये आगे भी चलेगा। आपने इस तरह के आयोजन के लिए जो समय चुना है, ये समय भी सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इस पे बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को यह विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज
हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटीज के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, सामान्य मानवीय तक जस्टिस डिलीवरी के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को भी टेक्नोलॉजी की इस ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो, रूल्स और रेमेडीज इसकी जानकारी हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पिछले साल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए पान इंडिया आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले 2017 में
प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। इसमें मोबाइल और वेब एप्स के जरिए लीगल सर्विसेज को आम लोगों के लिए एक्सपांड किया गया था। इस तरह के प्रयासों में अब ये अथॉरिटीज एक कदम और आगे बढ़कर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी तो जनता का और हित होगा। साथियों, आजादी के 75 साल का ये समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। आज यहां देश भर से डिस्ट्रिक्ट जजेज आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। वैसे मुझे बताया गया है कि नालसा ने इस दिशा में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लीगल एड के जरिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं बार काउंसिल से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लॉयर्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, मुझे आशा है हम सभी के प्रयास इस अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि 2 दिन का ये आपका मंथन जिन अपेक्षाओं और आशाओं के साथ इतना बड़ा समारोह हो रहा है उतने ही बड़े परिणाम लाएगा। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके शुभ संदेश के लिए और इस प्रेरक संबोधन के लिए। उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें सदैव प्रेरित करती है। अभिनंदन और आभार उनका। देवी सज्जनों, इस 2 दिन के ऐतिहासिक आयोजन के उद्घाटन सत्र में अब समय है जब मैं निवेदन करूं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से कि वे आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। Namaste. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable the Chief Justice of India, Shri Justice N.V. Ramana, the Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju ji, my distinguished colleague and the Executive Chairperson of the National Legal Services Authority, Shri Justice Uday Umesh Lalit, brothers and sisters on the bench of the Supreme Court, Chief Justices and Judges of the High Courts, judicial officers across the nation, distinguished members of the Bar, members of the National Legal Services Authority, the state and the district legal services authorities, and students of law. It is an honor to propose the vote of thanks for the inaugural of the first All India District Legal Services Authorities meet of 2022. We have gathered here to celebrate and deliberate on the realization of the constitutional ideals of access to justice. This first All India District Legal Services Authorities meet is an endeavor to honor the remarkable effort of the district level and grassroots stakeholders who have strived long and toiled hard to enable access to justice in the remote regions of our country. In a nation as vast as ours, where graded inequality still persists, justice ought not to be limited to the socio-economically privileged sections of our society. It is the duty of state actors to secure a just and egalitarian social order in which the legal system promotes justice
and ensures that opportunities for securing justice are not denied to any segment of society due to social and economic disabilities. NALSA is an ambitious project of constitutional reach which uses the bottom-up approach to ensure that access to justice penetrates through the rivers, mountains, and deserts of our beautiful landscape. The first session today is going to be deliberating upon artificial intelligence and technology. NALSA, similar to the E-Committee of the Supreme Court, uses technology to enhance the outreach of its services. The E-Committee has established E-Seva Kendras in 26 high courts and 500 district courts to enable litigants to obtain information on the case status, extend assistance in e-filing of cases, and to avail of the full range of services provided by the e-courts project. Similarly, NALSA provides online mediation services and a legal aid management portal which helps individuals secure access to information. Together, we possess the ability to taper the digital divide by widening the reach of technology. Technology does not have a human face, but deployed with understanding, it has the potential to realize access to justice. Appropriate technologies must be developed locally and close consultation with the beneficiaries in order to optimize the benefits of the services we provide. Technology must not be used to substitute the role and labor of humankind. Rather, it must be employed to aid and enhance the work of humans. The challenge before us as judicial administrators is to maximize the outreach of our services by integrating technology with a human face. The deliberations over the next 2 days will enable us to assess where we stand and reach out with commitment to the future. The impact of technology on furthering access to justice to every citizen is significant. During this year, up to 28 July 2022, our e-Tal website has recorded 250 crore e-transactions. Up to 30 April 2022, 5.46 crore automated emails have been sent to citizens. 35 lakh hits are recorded daily on the eCourt Services mobile application. 19.2 million cases were heard on video conferencing by the high courts and the district courts as of 30 April 2022. 1.78 crore cases have been disposed of by virtual courts. The National Judicial Data Grid has data of 17 crore decided and pending cases. Common service centers in every Gram Panchayat are being set up under the auspices of the Digital India initiative of the Union Government. The integration of e-court services with common service centers will ensure that the reach of the Indian judiciary extends to every citizen in every village across India. I extend a sincere vote of thanks to the stakeholders who have gathered here today. I thank the Honorable Prime Minister for sparing his valuable time to attend this event and to share his vision for the future. I thank the Honorable Chief Justice of India, who is the pillar of support behind every initiative of the Supreme Court, including NALSA and the E-Committee. I thank my brother judge, my distinguished colleague, Chief Justice Uday Umesh Lalit, for his invaluable drive to secure access to justice that has propelled the rights framework in a true direction. Our thanks to the Union Minister of Law and Justice, who has abundantly supported the endeavors of the Supreme Court and its interaction with technology. And I also thank every officer of the Department of Justice. I would also like to take this opportunity to thank the members of the National Legal Services Authority at the national, state, and district levels, without whose precious contribution the ideal of access to justice would have remained buried deep in the pages of law and statutes.
They work and continue to work tirelessly to secure access to justice for the marginalized segments of society in remote locations across India. In the judicial system, they are truly our frontline workers. I would also like to extend my gratitude to the organizers for their excellent logistical support in convening this event. I look forward to our celebration of the ideals of Nalsa and therefore of the Constitution today and every day. Namaskar. Thank you. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का। दिव्य सज्जनों, फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट का उद्घाटन सत्र अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप सब अपनी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करेंगे, जिनकी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस 2 दिन के हमारे कार्यक्रम में, इस आयोजन में लीगल सर्विसेज एट 2047 उसको एक नई गति मिली है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को। Enhances and exhilarates each and every one of us. Today is a day that we will remember.